welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या कहा आहान शेट्टी ने नेपोटिज्म पर? किस तरह मलाइका अरोरा नेल कर रही हैं सोशल मीडिया ट्रेंड? कहां ऑडिशन देने से डरते हैं रणबीर कपूर? मलाइका अरोरा ने लेटेस्ट सोशल मीडिया ट्रेंड को किया परफेक्टली फॉलो. नेटिजन्स ने नोरा फतेही को मलाइका अरोरा पार्ट 2 कहा. सोशल मीडिया यूजर्स को नोरा फतेही की चाल लगती है वियर्ड. मलाइका अरोरा इंटरनेट पर सुपर एक्टिव रहती हैं. मलाइका अरोरा सोशल मीडिया के हर लेटेस्ट ट्रेंड को न सिर्फ फॉलो करती हैं, बल्कि उसे स्ले करती दिखती हैं. रिसेंटली मलाइका अरोरा अपनी लेटेस्ट रील की वजह से इंटरनेट पर छाई हैं, जिसमें वो लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करती दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो को मलाइका अरोरा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया, डांस विथ मी, स्वे विथ मी. इसके अलावा मलाइका अरोरा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सेल्फ केयर रूटीन के साथ वो खुद को पैम्पर करती दिख रही हैं. Yes, some nice good self-care. Perfect before some makeup. Right, Rishma? Yeah. जहां मलाइका अरोरा का ये वीडियो उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है, वहीं कुछ नेटिजन्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मलाइका अरोरा के इस वीडियो पर उन्हें ट्रोल करते हुए कमेंट में लिखा, कितना भी मेकअप कर लो, लगोगी एलियन ही. तो दूसरे ने लिखा, सेल्फ केयर इज डूइंग इट योरसेल्फ, नॉट हैविंग समवन डू इट फॉर यू. Another user commented, इसको तो बुढ़ापे में भी चैन नहीं है. वैसे सिर्फ मलाइका अरोरा ही नहीं, नोरा फतेही को भी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. यही नहीं, नोरा फतेही को सोशल मीडिया पर मलाइका अरोरा से कंपेयर भी किया जा रहा है. कुछ नेटिजन्स ने तो नोरा फतेही को मलाइका अरोरा पार्ट 2 तक कह दिया है. लेकिन आखिर क्या वजह है जो सोशल मीडिया यूजर्स अपनी फेवरेट और खूबसूरत स्टार नोरा फतेही के साथ इतना बेरुखा बिहेव कर रहे हैं? तो इसकी वजह है नोरा फतेही का ये वॉकिंग स्टाइल, जो अपेरेंटली नेटिजन्स को लगता है मलाइका अरोरा की कॉपी. और इसलिए जैसे ही नेटिजन्स ने इस लेटेस्ट वीडियो में नोरा फतेही को चलते देखा, वो हो गए हार्श. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैमरास के लिए पोज कर रही हैं नोरा फतेही. वैसे तो हर बार की ही तरह एकदम हॉट दिख रही हैं. नोरा फतेही इस वक्त प्रिंटेड बॉडी कॉन्ट्रास्ट और हाई हील्स में न्यूड ग्लोइंग मेकअप एंड हाई पोनीटेल लुक में सुपर ग्लैमरस नजर आ रही हैं. लेकिन जैसे ही यहाँ उन्होंने चलते चलते कैमरास की तरफ देखते हुए पोज किया, नेटिजन्स को मिल गया मौका उनकी वॉक पर कॉमेंट करने का. ट्रोलिंग नोरा फतेही, a user wrote, सीधा नहीं चला जाता क्या? एक और यूजर ने लिखा, टेढ़ी होकर क्यों चलती है इतना? At the same time, many people are calling Nora Fatehi as Malaika Arora Part 2. वैसे पहले भी जब नोरा फतेही को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, तो उन्हें उनकी वॉक के लिए ट्रोलर्स ने काफी ट्रोल किया था. और मलाइका अरोरा तो अपनी वॉक के लिए कई बार नेटिजन्स का निशाना बन चुकी हैं. ऐसे में अब लगता तो यही है कि स्टार्स को ट्रोल करते रहना कुछ लोगों की आदत सी बन चुकी है. और इसलिए कभी उनके वॉकिंग स्टाइल को लेकर तो कभी उनके सेल्फ केयर रूटीन पर अक्सर नेटिजन्स कुछ न कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं. नेपोटिज्म को लेकर आहान शेट्टी हुए ओपन अप. आहान शेट्टी ने कहा, वो है प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म. बॉलीवुड में बने रहने के लिए करेंगे हार्ड वर्क. सुनील शेट्टी के बेटे हैं आहान शेट्टी. आहान शेट्टी ने खुद को बताया प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म. आहान शेट्टी ने कन्फेस किया कि अपने एक्टर पापा सुनील शेट्टी की वजह से बॉलीवुड में उनकी एंट्री हो गई आसान.
बॉलीवुड में नेपोटिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर कुछ दिन में न्यूज में छाया रहता है। अक्सर स्टार किड्स को नेपोटिज्म के कारण टारगेट किया जाता है, फिर चाहे वो अनन्या पांडे हो, जानवी कपूर हो, सारा अली खान या खुशी कपूर और सुहाना खान ही क्यों ना हो। लेकिन सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी ने पहली बार नेपोटिज्म को लेकर अपनी राय खुलकर रखी है और ये भी माना कि वो नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट है। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में अहान शेट्टी ने कहा, When it comes to nepotism, I accept it. I am a product of nepotism. My father is an actor. I did want to become an actor. And yes, we do have it easier. I am not going to deny that at all. But at the end of the day, everyone has to work hard to be in this industry. Especially, you have to work really hard. I am very, very happy and honored to be a part of this industry. And I don't want to take advantage of it. So I am just gonna work hard and keep my head down. बता दें, अहान शेट्टी ने 2021 में आई फिल्म तड़प के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है, जिसमें तारा सुतारिया उनकी को स्टार थीं। The film received mixed reviews from the audience and the critics alike. Recently, इस फिल्म के लिए अहान शेट्टी को बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से फेलिसिटेट भी किया गया है। वैसे इससे पहले सुनील शेट्टी ने भी नेपोटिज्म डिबेट को लेकर एक इंटरव्यू में ओपन अप होते हुए कहा था, This whole talk about nepotism hurts. It is something that there is in every field. Is my son or daughter not allowed to dream of becoming an actor just because their father is an actor? Does that mean the dream of that child needs to be squashed? An industrialist's son dreams of taking over the business after his father. Is that dream wrong? A kid sees all the love their parents received from their fans. Is it wrong of them to want the same for themselves? People run to the best school and try all their influences to get their child admission. Is that wrong too? I don't know where this is coming from. ऐसे में अब नेपोटिज्म को लेकर अहान शेट्टी के इस कैंडिड कन्फेशन की बात कह सकते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए उन्हें क्या करना है वो बेहतर जानते हैं। रणबीर कपूर ने कहा, वाइफ आलिया भट्ट की तरह उन्हें नहीं चाहिए टिकट टू हॉलीवुड। रणबीर कपूर ने किया रिवील कि हॉलीवुड में ऑडिशन देने से उन्हें लगता है डर। फिल्म ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान का रोल हुआ रिवील। रणबीर कपूर बहुत जल्द नजर आने वाले हैं उनकी मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र में। इस फिल्म में रणबीर कपूर अपनी वाइफ आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे और जहां तक आलिया भट्ट की बात करें तो वो इन दिनों बिजी हैं लंदन में अपनी हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग में। ऐसे में जब रणबीर कपूर से उनके हॉलीवुड ड्रीम्स के बारे में पूछा गया तो ही सेड, आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ ऑडिशंस। The dreams Alia has, I have never seen in anybody else. But I am happy where I am. यही नहीं, इस पर आगे बात करते हुए रणबीर कपूर ने कहा, मेरी गाड़ी यहाँ ठीक चल रही है। I am doing just fine here. I am happy with that much. I don't have any Hollywood dreams. All my dreams are for Brahmastra. I have always believed that if you want to reach audience worldwide, you can do it with your own culture and language. I feel whatever content is entertaining in your culture, it can touch all audiences. आपको बता दें कि रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र को 7 साल लगे हैं बनने में और फिल्म अब सितंबर में रिलीज के लिए तैयार है। ऐसे में इस फिल्म में शाहरुख खान भी एक बड़े रोल में नजर आएंगे और उनके रोल की डिटेल्स भी बाहर आ गई हैं। Reportedly, Shah Rukh Khan plays the role of a scientist who is working towards creating a powerful energy from resources around him. He has access to Brahmastra, which is a major source of his energy.
He appears in the first 30 minutes of the film. वहीं कुछ फैंस ने शाहरुख खान को स्पॉट किया इन ब्रह्मास्त्र टीजर और सीन की पिक शेयर करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, I am 100% sure he is at IMSRK in ब्रह्मास्त्र teaser. His body style similar to SRK. एक और यूजर ने लिखा, मेगास्टार #SRK from #ब्रह्मास्त्र। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर किस तरह परफॉर्म करती है। हाई हील्स में गिरते गिरते बची उर्वशी रौतेला। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पैप्स के लिए पोज करने के लिए शी ट्राइड टू गो डाउन अ स्लोप, लेकिन हाई हील्स में होने की वजह से स्लोप पर उर्वशी रौतेला खुद को बैलेंस नहीं कर पाई। हालांकि इससे पहले वो गिरती, उन्होंने स्टेयर रेलिंग और अपने टीममेट की मदद से खुद को संभाल लिया और फिर वहीं से कैमरास के लिए पोज किया। रितेश देशमुख ने रैपर बादशाह के साथ अपनी एक फनी रील अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाली है, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन दिया, प्यार तो पत्नी से ही मिलेगा, इट्स योर बॉय। वेल, वीडियो में रितेश देशमुख के फेशियल एक्सप्रेशंस देखने लायक हैं। शिल्पा शेट्टी जितनी फैंस की फेवरेट हैं, उतनी ही वो पापराज़ी की भी हैं। हर बार की तरह इस बार स्पॉट होने पर शिल्पा शेट्टी ने दिखाया अपना विटी और फनी अंदाज, जब पैप्स ने उनके शूज पर कमेंट करते हुए कहा, अलग अलग शूज, तो कुछ इस तरह से शिल्पा शेट्टी ने दिया जवाब। शिल्पा मैम, आपने आज भी अलग अलग शूज पहना है। हाँ। शिल्पा जी 2 मिनट। नहीं, अभी हमको नहीं पता ना मैम, हम तो गरीब है ना। रिसेंटली अनुष्का शर्मा अपने क्रिकेटर हस्बैंड विराट कोहली और डॉटर वामिका के साथ वेकेशन पर मालदीव्स गई थीं, जिसके कुछ लेटेस्ट और सोलो पिक्चर्स उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पे पोस्ट किए हैं। इसमें अनुष्का शर्मा ब्लैक स्विम सूट में नजर आ रही हैं। इन पिक्चर्स को डालते हुए अनुष्का शर्मा रोट, व्हेन द सन मेड मी शाई। प्रियंका चोपड़ा अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी रहने के बाद भी खुद के लिए मी टाइम निकाल ही लेती हैं, और इस बात का प्रूफ है उनका ये लेटेस्ट पोस्ट, where Priyanka Chopra took to Instagram to share a video endorsing a travel company that shows her chilling by the pool. Sizzling in a purple swimsuit, Priyanka Chopra raised the temperatures on Instagram as soon as she posted the video. Coming up on the show, Sonali Bendre ने किया Zoom से exclusively interact. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is an absolute fighter. She's been ruling our hearts since the 90s. I'm talking about the very talented Sonali Bendre. Thank you for joining me. Thank you for having me and thank you for this lovely intro. You fought cancer, you went through that stage and then you came out and then you went in the sets. It must be a completely different feeling. Your body is still healing. It is there. So I want to know how that was for you. Look, for me, Broken News was the script that I really liked. I fell in love with. Yeah. I didn't even know which platform it was going to at that point of time. I just wanted to be part of the script. In fact, it's because it's an adaptation of an original show from BBC called Press. And when I saw it, I said, look, I like it. I just want to see how do you adapt it. That is the thing, but otherwise, I like it, I'm interested. Then they went into writing an adaptation and then they came back to me with it. And I really liked that also. I had certain points that I wanted. I had a director and a writer who were so collaborative that they took what I wanted to say in. Beautiful, loved it. Here I could say what I wanted. So I loved that fact about it. The fact that I was shooting in Mumbai was also another added benefit for me because, you know, during COVID times, health-wise, I was not sure how is this going to go. But I was on set 12 hours, 13 hours, 14 hours, whatever it took. And my body took it. And I thrived in it. I'm so grateful for the love I got. And I actually got to know how much I was loved with this. And so to a certain degree, if you actually sit back and look at it, had I not gone through it, I wouldn't have known how loved I was. And that is overwhelming. Having said that, when I put that out, it was just a matter of having my own narrative. And I didn't want it out as speculation, as gossip. I wanted the words to be mine. I wanted the story to be mine. That this is the way it is. I didn't want gossip around it. So once I had done that, for me, I thought it would be hibernation. Get well, get ready, hopefully survive it. And but the response I got
And what I realized was that cancer as a disease is very common, you know. It's really not that uncommon. And yet me, exposed to the world, educated, well-read, caught by surprise because, hey, how can I get cancer? How can it happen to me? I didn't know anything about it. And I said, why didn't I know about it when it is so common? Every strata of the society, there is somebody who has been through it. You've seen it in every age group. You've seen it from cities to, you know, small towns to villages. Anybody, everybody, all across the planet. It's just that we are not talking about it. And what happened was, so that was a shock to me, that why was this not being spoken about? Second thing that I realized was that people were deliberately hiding it. And there were so many people who were not sharing it with their close family also, because they thought it was a stigma. And you know, for me, because I shared it, I had my family and friends rallying around me, and that really helped me, because it was so hard, that journey. Imagine not having the support of your loved ones in that journey. How sad is that? And I said, no, I need to speak about it. It can't be a taboo. It cannot be a stigma. You can't help getting it. It's not in your control. So, you know what? This has to be spoken about. And that's why I started speaking about it. Also, the thing that I realized is that if you can be heard, if there is certain, then this is something that I should be giving voice to. And I just needed to have conversation around this, so that more and more people could understand that it's not as scary, and that if you detect it early, it can be cured. Because the moment anybody said cancer, it was connected with death. Yeah. There was nothing else that you thought of, but it needn't be. And just to make people understand that if you detect it early, it can be cured, which means you need to detect it, which means you need to test it, which means you need to accept the fact that this is a possibility, and hence you need to test it. So I think that was what was the thing. I promised myself I will talk about it, and I promised myself I will not hide what I'm going through. I'll speak the truth, but I'm not going to be whiny. I don't want sympathy. I don't want the pity. I don't want that. Yeah. And that was not the idea of putting this story out. So that was not what I wanted. Also, on the other hand, there was a very selfish reason to do it. That when I spoke about, say, my hair loss, was the time when I was getting scared, or I was feeling that, how do I face the world? This is not the way I want to be seen. And the moment I understood that fear was setting in, I walked out. I realized I'm not in my country. Not so many people know me as me. So you know what? It's an easy way out. I said, you know what? I'm putting it on social media. It's out there forever for everybody to see. And it was liberating. There was nothing to be scared anymore. So for me, being able to do that was a catharsis. It was selfish reason. It was for me to get through it that I did it. So the fact that it has inspired others is like a byproduct. And I'm happy that it has done it. But I have to be honest, I was not going out there to inspire anybody. I was just trying to survive. And you've done a fabulous job at that. With Broken News, like we said, is a time where OTT is giving fabulous roles to women particularly. And there was a time that wasn't happening, and particularly for women of certain age. Absolutely. Tell me how that has been so impactful for everybody else, because it's been a game changer. Otherwise, you were stuck in playing those, particular roles that they would give you for a And I living. definitely didn't want that. That was past for me, and I didn't want to live in the past. I wanted to move ahead, and OTT has given us that chance. But what you say is so true, that women, and especially my age group, is suddenly seeing so much of work coming their way because of this, because there's so many stories. But I would like to add that it's not just women. I think all marginalized voices are kind of getting a platform. I agree. And because of that, while we are getting these roles, there are very interesting new voices where storytelling is concerned, where direction is concerned, where actors are concerned. People who probably would not have had the chance can play characters and can be seen, and their acting talent can be appreciated because of the platforms and the kind of stories that are being told. So this getting different voices in, this diversity that is coming in, not just for women, but for everybody, is, I think, it's just like a boon for content and for actors and for all creative people, I would say. Thank you so much, Sonali.
It was Thank you. absolutely lovely chatting with you. Sorry we took so much time. No, it's I could always go a on. pleasure chatting with you. You're absolutely lovely. I think the panel discussion we did also, I so enjoyed that chat with you. It showed me what you think, and it is so amazing. And you know what? That panel discussion was so beautiful because it just reiterated the fact that what you look at when you look at media, they're all human beings behind it. But I I do could. hope that we've done justice to it. I Yeah. really hope, and I want to know what you think. 100%. Because it would not be fair if we have not done justice to it. We would like to. So we've really tried to be authentic. I definitely will call you and I'm going to see that. Yeah. Thank you so much, Sonali. It's Thank you. lovely talking to you like always, and lots of love. Thank you. Thank you for having me. Thank you to your viewers. I've enjoyed the conversation. I have to. Thank you.